गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टॉप 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि हर एसएससी एग्ज़ाम और इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्ज़ाम और वो सब एग्ज़ाम जहाँ पर इंग्लिश का पोर्शन आता है, जैसे अगर आप पंजाब के एग्ज़ाम्स देख सकते हैं। सो इसके लिए हम ये टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे जो कि बहुत हेल्पफुल रहेंगे बिकॉज फ्रेंड्स ये रिपीट होते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एंड दिस लेक्चर इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ विशाली शर्मा, योर एजुकेटर एट पैशन पाठशाला। सो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज वंस इन अ ब्लू मून। इसका मीनिंग है समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, जो बहुत कम बार घटित होता हो और कम बार हैपन होता हो। सो आप इसका सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। टॉम वुड गो बैक टू मॉन्ट्रियल, प्रोबेबली मैरी सुजैन, प्रोबेबली फ्लाई होम वंस इन ए ब्लू मून टू सी हिज फादर, कि वो कभी कभार ही अपने पापा को और अपने फादर को देखने आता है। नेक्स्ट इज बीटिंग अराउंड द बुश। इसका मीनिंग है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। जब भी हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं उसमें मेन टॉपिक को अवॉइड करते हुए हम कुछ भी और डिस्कस करें, दैट इज़ कॉल्ड बीटिंग अराउंड द बुश। सो इसका सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। ही बीट अराउंड द बुश फॉर एन हाफ आवर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। सो ये फ्रेंड्स आप कैसे भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ सेंटेंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। आप इसके रिलेटेड कोई भी सेंटेंस खुद से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चिप ऑन योर शोल्डर। इट्स मीनिंग व्हेन समवन अबाउट समथिंग दैट हैपेंड अ व्हाइल अगो। इसका सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। ही हैज़ अ चिप ऑन हिज शोल्डर फॉर बीइंग अबंडन्ड बाय हिज पेरेंट्स इन हिज चाइल्डहुड। कि कोई भी ऐसी घटना जो आपको अपसेट करती है जो पहले हो चुकी है। नेक्स्ट इज क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस और फेलियर फ्रॉम पास्ट। कि जैसे कोई भी कंप्लेन करना किसी जो पहले पास्ट में जो घटित हुआ है उसके बारे में। इसका सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। ही वॉज मैड बिकॉज ही कुड नॉट क्लियर द कट ऑफ ड्यू टू अ सिली मिस्टेक, बट देन ही रियलाइज्ड देयर वॉज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क एंड डिसाइडेड टू बिकम केयरफुल। नेक्स्ट इज स्पिल द बीन्स। सो इसका जो मीनिंग है वो है टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। सो आप इसका सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। द लिटिल वन स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज वेकेशंस वी हैड प्लान्ड। सिक्स्थ इज पीस ऑफ केक, समथिंग दैट इज ईजी टू अंडरस्टैंड और डू। सो इसका मीनिंग है फ्रेंड्स कि कोई भी चीज़ जो ईजी हो करने में। Blessing in disguised, something good and useful that did not initially seems that way. Being laid off was a blessing in disguise. Within a month, I got a much better job. Next, eighth is come hell or high water. इसका meaning है possible obstacles in your path will not stop you. So इसका आप sentence create कर सकते हैं. I have decided that come hell or high water, I will become an engineer. नेक्स्ट इज आइसिंग ऑन द केक। इसका मीनिंग है समथिंग दैट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट। कोई भी चीज़ जो अच्छे से बेहतर बन जाए। इंडियाज विक्ट्री ओवर ऑस्ट्रेलिया वॉज लाइक आइसिंग ऑन केक। नेक्स्ट टेंथ इज कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। सो इसका जो मीनिंग है वो है बी वेरी एक्सपेंसिव। सो आप इसका सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। अमेरिकाज फ्लाइट टिकट इज कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। नेक्स्ट इज हियर इट ऑन ग्रेप वाइन। सो इसका मीनिंग है टू हियर रूमर्स अबाउट समथिंग और समवन। सो आप इसका सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। आई हर्ड इट ऑन ग्रेप वाइन दैट ही हैड स्टिफ्ड एन ओल्ड मैन आस्किंग फॉर हिज पेंशन। नेक्स्ट इज इट टेक्स टू टू टैंगो। इसका मीनिंग है एक्शंस और कम्युनिकेशंस नीड मोर देन वन पर्सन। सो आप इसका सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। इवन दो आई थॉट आई वुड बी फायर्ड आफ्टर द अल्टरकेशंस विद माई मैनेजर, thankfully upper management realized that it takes two to tango. Next is a bird's eye view, a view from a very high place that allows to see a very large area. और इसका सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। द सिंगापुर बिग व्हील ऑफर्स अ बर्ड आई व्यू ऑफ सिटी। सिमिलरली फ्रेंड्स आप बुर्ज खलीफा को लेकर भी इसका सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ लिटमस टेस्ट। सो इसका जो मीनिंग है वो अ मेथड दैट helps to know if something is correct. So इसका जो sentence है वो है taking up the job served as a litmus test for me to know how good I was at applying my knowledge. Let us move further. 15th is to pour oil on troubled waters. इसका meaning है to make peace.
आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं, आई एम ऑलवेज स्टक पोरिंग ऑयल ऑन ट्रबल वाटर्स व्हेन माय मदर एंड वाइफ स्टार्ट देयर bickering. Okay. Next is to move heaven and earth, meaning to exert all efforts. So इसका आप sentence create कर सकते हैं. He moved heaven and earth to ensure that his family was taken care in the foreign land in his absence. Hand to mouth, live only basic necessities. और आप इसका sentence create कर सकते हैं. The severe drought led the farmers to live hand to mouth. नेक्स्ट इज जंप द बैंडवैगन. इसका मीनिंग है टू जॉइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड. आप इसका सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं. व्हेन ही वाज डिटेक्टेड विद डायबिटीज ही क्विकली जंप्ड ऑन द बैंडवैगन एंड जॉइंड द जुम्बा डांस क्लासेस. नेक्स्ट इज दिस इज रेपिटेटिव. 20th डिस्कस करेंगे. एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इट्स मीनिंग इज willingness to do something instantly. आप इसका सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं. शी एक्सपेक्ट्स मी टू मेक डिनर एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट इवन आई एम वेरी बिजी विद माई ऑफिस वर्क. Next 21 is a house of cards, a poor plan. The state's new scheme was initially welcomed but later turned out to be a house of cards when it was discovered how easily it was to perpetrate a scam. Next is black and blue. It means full of bruises. Its sentence is the young lad was all black and blue after a tiff with ragging senior. Next is fool's paradise, meaning false sense of happiness or success. Its sentence is they were living in a fool's paradise, refusing to accept that they were facing poverty. Next 24th is give cold shoulder. Its meaning is to ignore, किसी भी चीज़ को इग्नोर करना. और इसका सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं. आई सेंट हर अ मैसेज टू अपोलोजाइज फॉर माई मिसबिहेवियर बट शी गेव मी अ कोल्ड शोल्डर. Next is to be. Its meaning is to be in low spirits. Sentence is Sam was in a doldrum after he was insulted by the boss in front of his colleagues. Next 26th is to cut corners. Its meaning is to do something badly or cheaply. So आप इसका sentence create कर सकते हैं. They really cut corners when they built this bathroom. The shower is leaking. Next 27th is to add insult to injury. Its meaning is to make a situation worse. To add insult to injury, the car drove off without stopping after knocking me off my bike. Next, to you can't judge a book by its cover. आप किसी भी book को, किसी भी person को उसकी appearance से judge नहीं कर सकते. To not judge someone or something based solely on appearance. So इसका sentence है I thought this no brand bread would be horrible. Turns out you can't judge a book by its cover. Next is break a leg. It means good luck. Often said to actors before they go on stage. So इसका sentence है break a leg Sam. I'm sure your performance will be great. 30th is let the cat out of the bag. To accidentally reveal a secret, I let the cat out of the bag about their wedding plans. 31st is to feel under weather, to not feel well. Its sentence is I am really feeling under the weather today. I have a terrible cold. Next 32 is to kill two birds with one stone. Like जैसे एक ही तीर से दो निशाना. So इसका मीनिंग है to solve two problems at once. इसका सेंटेंस आप बना सकते हैं. बाय टेकिंग माई डैड ऑन हॉलीडे आई किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन. आई गोट टू गो अवे बट ऑल्सो स्पेंड टाइम विद हिम. कि मैं अपने फादर को हॉलीडे पे भी ले गया और मैंने उनके साथ टाइम भी स्पेंड किया. 33rd इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मीनिंग यू कैन enjoy two different opportunities at the same time. So इसका sentence आप create कर सकते हैं. By working part time and looking after her kids 2 days a week, she managed to get the best of both worlds. Next is speak of devil. So इसका meaning है the person you are just talking about actually turns up at that moment. So इसका sentence है Hi Tom, speak of the devil. I was just telling Sarah about your new car. Next is to be a good Smartian. Its meaning is to be kind and compassionate to someone in distress.
I was sure I would be stuck on the highway till the morning, but a good Smartian offered me a ride home. 36th is to put in a nutshell, meaning to say in a few words or to make something concise. The textbook development committee decided to put 30-page chapter in a nutshell to help save time for students during revision. नेक्स्ट इज टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर्स. सी फ्रेंड्स, ये एक रेपिटेटिव है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स मूव फर्दर. 38th इज टू मूव हेवन एंड अर्थ, मीनिंग टू एक्सर्ट ऑल एफर्ट्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. 39th is a house of cards, meaning a poor plan. The state's new scheme was initially welcomed but later turned out to be a house of cards when it was discovered how easy it was to perpetrate a scam. Next, last is to call a spade, meaning to be brutally frank, outspoken, blunt in speech. Let's call a spade, popular he may be, but that man is a liar. So thank you so much friends. I hope you understand all the words, all the idioms and phrases. हम इसके 5 से जल्द ही आपके सामने आएंगे. सो आप पैशन पाठशाला के थ्रू अपडेट्स देखते रहिए और अपने हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए. थैंक यू सो मच.